सो हेलो गाइस, फाइनली 14 साल के इंतज़ार के बाद RDR1 पीसी के लिए आ चुका है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट एक और बात कि मैंने इससे पहले RDR2 नहीं खेला है, तो मेरा नया एक्सपीरियंस होने वाला है इस गेम को लेके। तो गाइस मज़ा आएगा, इसके एपिसोड आते रहेंगे, पूरी गेम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसकी गेम की स्टार्टिंग कैसे होती है। Extra, extra, health benefits. Extra, extra, read all about. Hey, watch it, mister. Read all about it. Bill Williamson's gang terrorizes in Austin. Extra, extra. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we helped the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization
They are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. सो गाइस यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई है, आपको मैं मेन पॉइंट समझाता हूँ। सो गाइस स्टार्टिंग में जो ये दो लेडी का कन्वर्सेशन हुई थी, तो गाइस इसमें ये बात करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अब फाइनली सिविलाइजेशन इनके इस सैवेज लैंड में आ रही है, क्योंकि जो यहाँ के लोग थे उन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है इन क्रिश्चियनिटी। अब वो लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं, और जिन्होंने भी अपने घर थे, ज़मीन थे, वो उन्होंने खो दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब उनको जन्नत प्राप्त होगी। अब गाइस यहाँ के कन्वर्सेशन में ये रहता है कि भाई जो जेनी है वो इस चीज़ पे सवाल उठाती है कि ये जो हमारा बिलीफ है कि कॉम्युनियन जो लोग लेते हैं वो नरक जाने से बच सकते हैं, तो ये रूल उनके लिए है ही नहीं, जो कि कॉम्युनियन लेने का मौका भी नहीं पा सकते। सो गाइस यहाँ पे जो प्रीचर है वो जवाब देता है कि इनोसेंट और सैवेज के बीच बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और जो यहाँ के नेटिव लोग हैं वो इनोसेंट नहीं है, क्योंकि उनके जीने का तरीका जंगली है, और ये कॉलोनियल माइंडसेट को दिखाता है जो कि लोकल लोगों को अपने रिलीजन के थ्रू सिविलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मिसेस डिकिस बताती हैं कि नेट जॉन्स जो एक लो क्लास और डिसरिस्पेक्टफुल फैमिली से आता है वो इलेक्शन लड़ रहा है, और बुश कहती हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, पॉलिटिक्स में उनके पास फ्रेंड्स हैं, और पैसों से वोटर्स जरूर आ सकते हैं। अब यहाँ पे जेनी एक लविंग और हेटफुल एक्शन का फर्क समझने में परेशान हो जाती है, लेकिन प्रीचर उससे बोलता है कि भाई तुमको कोई भी चीज़ की दिक्कत हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ। सो भाई हम अब कोई तो स्टेशन पर रुक चुके हैं, और उसका नाम है आर्माडिलो स्टेशन। तो भाई अभी देखते हैं, यहाँ से हमको बोल रहा है कि भाई एक सलून के अंदर हमको जाना है। भाई पूरे ओल्ड वाइब्स है यार। ओ भाई ये कौन आ रहा है? भाई ये तो कोई शराबी है। तो भाई हमको इस घर के अंदर जाना है, यहाँ पे सलून है। भाई सलून में शराबी क्या चल रहा है? चलते हैं यार अब अंदर ही। Over here! You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. तो भाई ये अब हमको कहीं तो लेके जाने वाला है, अब देखते हैं। भाई घोड़ा चलाने वाले हैं हम भाई। भाई शराबी को देखो भाई, ये दोबारा गिरेगा क्या? गिर गया ले भाई। तो भाई चढ़ जाते हैं इसमें। Take it easy until we're out of town. Ain't no point in causing a ruckus. What they were. तो भाई मैंने जो है ना अपने हिसाब से ना थोड़े कंट्रोल्स भी सेट कर लिए हैं, तो अभी देखते हैं भाई। अब ये घोड़ा को चलाना भी, भाई ये इतना धीरे क्यों भाग रहा है? अच्छा यहाँ पे आ गया ऑप्शन, बता दिया है यार। इसका कंट्रोल हमको चेंज करना पड़ेगा भाई। मैं लेफ्ट राइट का शिफ्ट डालूंगा, इसको चेंज करके बाद में। अभी देखते हैं भाई हमको कहाँ लेके जाता है। So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. ओहो क्या भाग रहा है भाई घोड़ा। Fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now.
Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians. ओके तो भाई यहाँ पे कुछ स्टेमिना के बारे में बता रहे हैं। तो भाई ये जो ग्रीन कलर का बार देख रहे हो मैप के लेफ्ट साइड में, तो वो हमारा स्टेमिना का है, हॉर्स का स्टेमिना। Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as most read it back to. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me, there's things you better off not knowing. भाई ये कहाँ लेके जा रहा है इतनी दूर? गोल्ड V2 फोकस। भाई कोई तो मारा पड़ा है। अच्छा जानवर मारा पड़ा है। Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. तो भाई यहाँ से तो ये हमको छोड़ के जा रहा है। अब आगे देखते हैं भाई यहाँ पे क्या सीन रहता है। I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you.
I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. सो गाइस यहाँ पे जो हुआ है ना, बेसिकली इतना ही पता चला है कि भाई ये दोनों पहले फ्रेंड्स थे और कुछ तो इनके बीच में हुआ है जिसकी वजह से अब बिल जो है वो मार्टिन से दूर रहना चाहता है। सो गाइस इसके बारे में इतना ही पता चला है। आगे जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी इनके बारे में हमको डीपली पता चलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है इसी पे पूरा मेन स्टोरी फोकस किया गया होगा। न्यू फ्रेंड्स ओल्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो भाई यहाँ पे अपन कोई तो कमरे में है। Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. Huh. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you. For saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. I pray to God and the devil answers. तो भाई अभी यहाँ पर देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या है। अभी हमको वापस उसी लड़की के पास जाना है, वहां से कुछ तो होगा। अभी यहाँ पे क्या बन रहा है भाई? भाई कुछ तो भाई बन रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा भाई। यार ये म्यूजिक बहुत खतरनाक है। Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Walk with Bonnie. तो भाई अभी चलते भाई, ये कहिए भाई घोड़े पे चलो। There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Hop on up. He won't bite.
माउंट योर न्यू हॉर्स। Let's make a tour of the ranch. अरे You can भाई get ये your कैसे bearings. बैठा है? तो भाई हमको उसके पीछे पीछे जाना है, ये देखते हैं। When you're riding close to a companion, you can hold left shift to match their speed. Okay. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. यहाँ पे जनरल स्टोर है। Well, hello there. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? भाई First मुझे लगता है ये impressions are हमको ना hard ये to पूरी जो erase. जगह है ना उसका एक ओवरव्यू दे रही है, मतलब वो हमको दिखा रही है कहाँ पे क्या क्या है। जैसे यहाँ पे भाई हॉर्सेस वगैरह है, हॉर्सेस की जगह है यहाँ पे। और वी से हम कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना उसमें अपन फोकस कर सकते हैं, वी अगर दबा दे तो। यहाँ पे देखो जैसे ट्रेन स्टेशन है। यार ये हॉर्स थोड़ा चलाने में मेरे को मुश्किल हो रही है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। Yeah! Giddy up! That's the barn over there. Paul built it himself. तो when भाई I ये was just a बान little है, girl. तो भाई वही है यार, ये हमको पूरा एकदम जगह दिखा रही है कहाँ पे क्या क्या है। ये बान हो गया। और I don't have time to be waiting around. भाई टाइम ही नहीं है उसके पास यार, यहाँ पे भाई समझ नहीं आ रहा है कैसे चलाना है। And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. What are you waiting for? Come on, I don't bite. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Ready, Mr. Marston? Let's mount up and patrol the ranch. तो भाई रात हो चुकी है और अब दोबारा अब तो कहीं तो जा रहे हैं। अब शायद से गाइस मुझे को लग रहा है ना हंटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि भाई इसने गन थमा दिया हमें। हंटिंग के लिए जा रहे हैं शायद। ओ भाई आसमान तो बड़ा प्यारा लग रहा है। Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? Easy now. तो अब यहाँ पे हमको इसको रखना है। भाई रुके, भाई तो रुक ही नहीं रहा घोड़ा। अरे इसको कैसे रोकूं? ले आया भाई। वो क्या जंप था। दोबारा मार। अरे वाह भाई, घोड़े से उतरना कैसे है यार? उतर ही नहीं रहा ये। यहीं से मारे क्या?
कहीं से मारते हैं भाई, खरगोश है भाई। भाई कैसे उतरेगा ई से? अच्छा तो भाई गाइस ई से ही आप चढ़ सकते हो और ई से ही आपको उतरना है। एंटर एग्जिट ई से ही है। तो भाई इसने मार तो दिए हैं, मैंने भी यहाँ पे 2-3 मारे हैं बस। आधा टाइम तो घोड़े से उतरने में ही लग गया भाई। अब दोबारा से भाई चढ़ते हैं। भाई घोड़े को ना थोड़ा मतलब कैसे चलाना है, इसको रोकना वोकना थोड़ा टाइम लगेगा। पहली बार तो खेल रहा हूँ मैं। अब दोबारा कहीं और भी जाना है शायद। If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city, become a lady of leisure. Was that a coyote? Get those pests before they scare the livestock. तो भाई अपन दूसरे एक लोकेशन में आ चुके हैं जहाँ पे यहाँ पे कयोटीज को हमको एलिमिनेट करना है। I'm afraid you're mine. Come on, they're headed for the chicken coop. यार घोड़ा गाइस कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा मैं, मतलब कभी चलना है तो एकदम से स्पीड में नहीं जा रहा है, कहीं रुक जा रहा है अपने आप ही। भाई घोड़े सारे परेशान हो चुके हैं। पे चल यार, अरे यार क्या हो रहा है ये? That coyote won't be fast. Good shooting, Mr. Marston. Come on, boys. Well, we got rid of the coyotes. I just wish we'd saved all the chickens. Let's go. I'll take you back to your room. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Those folks in Thieves Landing have been sniffing around here again. Learn something new every day. सो गाइज अब हम यहाँ पे सोने के लिए आ चुके हैं। और गाइज ये पूरा सेम GTA 5 जैसा सीन है कि अगर आप यहाँ पे जैसे ही सोओगे तो आपका गेम सेव हो जाएगा और आप 6 घंटे बाद उठते हो। भाई आप देखो ये वॉल पे जानवर का स्किन लगा हुआ है, भाई ये घोड़े का ही होगा। तो गाइस अब इसको सेव कर देते हैं गेम को। और भाई आज की वीडियो यहीं तक थी। और भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना। और भाई और भी इसके एपिसोड्स आते रहेंगे, इस गेम को पूरा कंप्लीट करेंगे हम और भाई मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।